Assalamualaikum students, your today's lab is on oscillators and almost 10 to 14 आपकी जितनी भी labs बनती हैं सारी oscillators पे ही हैं. So we will be covering 10, 11 and 12 and then 13 and 14 later on inshallah. So we will start with the basics कि initially you should know what an oscillator is. ठीक है, वो किस तरह काम करता है. Then we will go toward the three set of oscillators, right? Which is basically phase shift oscillator, Colbert and Hartley oscillator, right? So oscillator is basically a circuit जो कि input लेता है of DC, right? And it convert that DC input voltage into a repetitive continuous alternating waveform, right? Without any input given, right? So if you can recall the operation of a capacitor and an inductor connected together, right? जब आप इन दोनों को एक साथ connect करते हैं, एक capacitor को with an inductor, considering कि आपका capacitor charge है, उस सूरत में क्या होता है? It basically discharges through the inductor, right? Up to the point कि totally ये discharge हो गया है and it is electromagnetic field has been developed across that specific inductor, right? And that changing electromagnetic field basically produce a back EMF and वो back EMF basically again आपका current flow produce करता है through this path. ठीक है, जब ये completely magnetized हो जाता है this inductive coil, right? So it started producing a current जो कि आपके again capacitor को charge up करता है. Means again आपकी एक voltage store होना शुरू हो जाती है in this capacitor. So this is a kind of cycle which goes on, right? आपका capacitor charged है and it will discharge via your inductor, and then your inductor is completely magnetized, right? And it starts to conduct a back EMF current, right? ठीक है, जिसकी वजह से आपका again capacitor charge up होना शुरू हो जाता है, right? So this phenomena of charging and discharging without any input is the base of your oscillator, right? So when as stated जो मैंने आपको verbally बताया है, आपकी जब capacitor completely charge हो जाता है, so it generates a it started discharging with the help across your inductor, right? And it basically when inductor is completely magnetized, right? So it produces a back EMF which results in the flow of the current again through the circuit, but in the आपका जो डायरेक्शन होती है जस्ट वो फ्लिप ऑन हो जाती है, राइट? सो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट कंटिन्यूज अंटिल जब तक कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स नहीं हो जाता. एंड व्हेन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कोलैप्स्ड इट मींस कि आपका एट दैट पॉइंट आपका जो कैपेसिटर है इट इज़ अगेन बैक्ड चार्ज्ड again, ठीक है? But this time the capacitor which is charged is on the opposite polarity, right? Previously suppose ये आपका charge था in this form कि ये आपकी plus terminal था, ये minus था. So जब inductor से current flow होगा, ठीक है? And again due to back EMF जब आपका दोबारा charging होगी capacitor की, it would be in the form कि ये plate आपकी minus है and this is plus, right? So let's say फर्स्ट साइकिल में जो आपका करंट फ्लो बन रहा है इट्स हैविंग अ पॉजिटिव पीक, देन इन द नेक्स्ट साइकिल ड्यू टू द इन्वर्टेड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पीक जनरेट करेगा, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट of producing energy forms or AC energy which can continue forever, right? But yes, actual में आपका continues forever नहीं रहेगा, amplitude will gradually go on toward decreasing, right? फिर there are three set of oscillations and sustained oscillations के लिए आपको एक constant energy continuously अपने oscillating circuit को provide करनी होगी, right? Which is basically the concept of feedback, right? So this specific circuit ये आपकी sustained oscillations है, right? This is a kind of oscillation which is increasing, right? But yes, if your signal is continuously increasing it can leads to a distorted signal or distorted output, right? And this is the kind of oscillations जो आपकी decrementing है, decaying oscillation है, right? And this is a constant amplitude oscillation, right? Sustained oscillation जिसको normally कहा जाता है. This is the version which we want or which we will be producing in our oscillators, right? So एक specific
फीडबैक दी जाएगी एंड दैट फीडबैक इज विल बी द एलिमेंट जो आपकी एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा ना हो, ख़ास अमाउंट से कम ना हो, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपकी फीडबैक होती है एंड बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक फीडबैक ही आपका सस्टेन्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है, राइट। सो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफायर, राइट। आपने ओप एम्प्स कवर किए थे, ठीक है, जिसमें आप फीडबैक फिनोमेना यूज़ करते हैं। दैट सिमिलर फीडबैक फिनोमेना कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन सिंपल एनपी एन पी एन पी ट्रांजिस्टर, राइट, और मॉसफेट्स एक्सेट्रा, राइट, जिसमें भी एनी काइंड ऑफ circuit which is basically amplifying your input voltage and you are feeding back that amplified signal, right, ठीक है। when you are feeding it back, let's say uh, normally if it's in inverted version आप इसको inversion से निकालेंगे एंड सेम एंगल पे आप उसको फीडबैक देंगे, राइट। सो तब क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड डाई आउट नहीं होगा, राइट, आप उसको सस्टेन्ड फीडबैक कंटिन्यूसली देते रहेंगे। सो आपका जो ऑसिलेटर का आउटपुट होगा वो कंटिन्यूसली सस्टेन्ड ऑसिलेशन की वर्जन में आएगा, राइट। So the phenomena lies behind the feedback in phase signal, right? Means आपने जो feedback करना है in oscillator, that should be a signal which is in phase with your input signal, right? Only in that case आपका जो amplifier है, if it's opposite in phase, right, तो वो दोनों superimpose होकर वो आपको cancel out effect और nullify या DC output देगा, right? So concept of sustained oscillations, right, lies in that in phase feedback signal, right. So this is the general formula, जहाँ पे भी आप oscillators का formula देखेंगे, this is equivalent to A, which is your normal output signal divided by 1 plus A into B. Now B is this feedback, right, and A is your normal amplifier output, right. So जब आप feedback देते हैं तो you can see कि आपका जो denominator है it is commutating, yeah, it is consisting of your input signal as well as your feedback signal, right. If this specific term is जो आपकी base में आ रही है 1 plus A into B, which is basically actual signal into feedback, if this term is AB is greater than 1, it means कि जो आपका feedback signal है it is greater than the input voltage signal, right. So in that specific case what you will be doing कि आपका जो feedback है because it's increasing, so it means कि आपका जो signal है it's continuously increasing, and in this specific case it will harm your device, right. And it's a kind of increasing amplitude signal, right, जो आपका ये version बनता है, this version, right. Second case is कि आपका signal AB is less than 1, right, ठीक है। In this specific case your feedback is kind of towards decreasing side, right. आप actual जो signal है उसको divide कर रहे हैं with a lesser amplitude, तो 1 minus something or some value which is less than 1, right. So in this specific case you are producing a specific signal जिसका amplitude decaying amplitude है, right, which is somewhat similar to this version, right. The final one is when AB is equal to 1. Now in this specific case the feedback is equal to the input voltage, and addition of input wave and the feedback wave जो है it will result in an amplitude of input which kind of produce the sustained oscillation, right. Oscillator goes on and the amplitude will remain constant, and hence आपकी जो oscillation obtain होंगी for this specific case that will be sustained oscillation, right. So these are the three scenarios जो आपके signal produce करते हैं. Let's move toward the types of oscillator. There are many types, right. You will go through Wien bridge and Hartley RC, phase shift oscillator, Colpit, clamp, crystal, right. You will hear many types of oscillator, and these specific oscillators are actually termed or classified based on a specific mechanism, right. जैसे आप कह सकते हैं कि आपको जो ऑसिलेटर है इट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, राइट. आपकी पॉजिटिव फीडबैक दी जा रही है, नेगेटिव फीडबैक दी जा रही है, और इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ वेव फॉर्म इन आउटपुट जो ये प्रोड्यूस कर रहा है. फॉर एग्जांपल साइन वेव्स बना रहा है, स्क्वायर वेव्स बना रहा है, रेक्टेंगुलर, स्वीप वेव, साइन सॉटूथ वेव, एनी टाइप्स, राइट. तो बेस्ड ऑन दोज आउटपुट्स
आपकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, राइट। सिमिलरली जो आपकी आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, वेदर इट्स इन मेगा रेंज, राइट, आपकी किलोज में है, राइट। नाउ यू आर वेरिंग योर रेंजेस, राइट, ऑडियो रेंजेस, ऑडियो रेंज में, राइट, लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, वेदर इट्स अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर रेडियो फ्रिक्वेंसी में काम कर रहा है, राइट। डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, राइट, आपको किस फ्रिक्वेंसी रेंज का ऑसिलेटर चाहिए। सो यू कैन क्लासीफाई योर ऑसिलेटर्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट फ्रिक्वेंसी। अगेन classification can be based on the type of frequency control used, right? For example, जो कंट्रोल एलिमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ एन आरसी सर्किट, राइट, या एलएनसी यूज किया गया है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आरसी में यू आर यूजिंग रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर, राइट, एलसी में यू आर यूजिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स, राइट। क्रिस्टल ऑसिलेटर में देयर इज अ क्वार्ट क्रिस्टल जो यूज किया जाता है, जो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड, राइट। सो अगेन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूनिट, right? Next is the classification based upon the nature of frequency of the output waveform, right? जैसे कि आउटपुट पे इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी आउटपुट सिग्नल, या वो वेरिएबल आउटपुट फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकता है, या ट्यूनेबल फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकता है। सो you can classify your oscillators based on all these mechanisms. Now, wider terms में there are two main classification, right? जब आप frequencies को कंसिडर नहीं करते, लेट्स से यू आर कंसिडरिंग ऑल ऑडियोज मेगाहर्ट्ज जितने भी आपकी बनती हैं, यू आर काउंटिंग देम ऑल, इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आप दो किस्म के मेन ऑसिलेटर्स के साथ डील करते हैं, राइट। वन इज़ योर हार्टली ऑसिलेटर, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ योर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। Now Hartley oscillator is kind of linear oscillator, and ये जो output produce करता है, those are sine wave output, right, and those are low distorted sine wave output. Other is relaxation oscillator. अच्छा, इसका आउटपुट साइन वेव नहीं होगा, these are नॉन साइनोसाइडल आउटपुट्स, आपके सॉटूथ वेव हो गए, ट्रायंगुलर हो गए, स्क्वायर हो गए, राइट। सो यू विल बी स्टडिंग 3 हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, राइट, जिसमें आपका आ जाएगा हार्टली, कॉलपिट ऑसिलेटर एंड योर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, राइट। एंड उसके बाद यू विल बी स्टडिंग 2 सेट ऑफ your relaxation oscillators, right. So these are separately each set of labs, right. So when you are actually using an oscillator, what are the applications, right. So there are many applications, right, because it's cheap and it's easy way of producing or generating a specific frequency of a signal, right. So आप इनको यूज़ कर सकते हैं to generate low frequency signal, राइट, आप इनको यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, यू कैन यूज़ अ स्टेबल स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी, राइट। एंड फ्रिक्वेंसी वेरिएशन जो आप ऐड करते हैं किसी भी ऑसिलेटर में, वो आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से यू कैन एक्चुअली अचीव दैट, राइट। जहाँ पे आपके आते हैं ना ट्यूनेबल जो आपके ऑसिलेटर्स होते हैं, जो कि नॉर्मली आपके रेडियो स्टेशंस में यूज़ किए जाते हैं, वेयर यू आर एक्चुअली मूविंग अ नॉब, राइट, एंड आप फ्रिक्वेंसी ट्यून कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्यूनिंग यू आर चेंजिंग योर चैनल्स, वहाँ पे आपके ऑसिलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। दैट ट्यूनिंग इज़ ड्यू टू योर पोटेंशियोमीटर्स, राइट। आप चेंज कर रहे हैं, आप अपनी फ्रिक्वेंसी वेरी करना चाह रहे हैं, व्हेन यू आर वेरिंग योर फ्रिक्वेंसी एट दैट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, आपका ऑसिलेटर वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, एंड इट इज़ कैचिंग द सिग्नल विच इज़ सुपर इम्पोज्ड ऑन दैट फ्रिक्वेंसी, राइट। एंड नाउ दैट सिग्नल जो फाइनली आपका पूरा सर्किट इम्प्लीमेंट होता है बीच में, जो कि एक्चुअल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऑसिलेटर जो होता है वहाँ पे मेन जो आपकी फ्रिक्वेंसी जिस पे आपका सिग्नल कैरी होकर राइट करता है, मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट। ऑसिलेटर्स आर इम्प्लीमेंटेड फॉर दैट फ्रिक्वेंसी, राइट। उस मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी को ट्यून किया जाता है, एंड देन आपका सिग्नल ड्रॉप डाउन होता है टू एक्चुअल ऑडियो फ्रिक्वेंसीज, एंड वहाँ पे आपकी लिसनिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, वहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स पे आते हैं, वहाँ पे आपके मल्टीपल पूरा इंटायर सर्किट है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट अपकमिंग सब्जेक्ट्स में इसको कवर करेंगे। एनी हाउ आप क्वार्ट्स वॉचेस में यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो सिस्टम वीडियो सिस्टम्स में दे आर इम्प्लीमेंटेड, राइट। सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको कहा रेडियो एंड टीवी एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस में दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड, मेटल डिटेक्टर्स, इन्वर्टर्स, अल्ट्रासोनिक एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, राइट। प्लस माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में भी इम्प्लीमेंट होते हैं, एंड मल्टीपल अदर यूजेस, अलार्म्स एंड बजर्स, राइट।
So this is the just initial your definition of oscillator, what an oscillator is, किस तरह काम करता है. Now the next set of videos will be on 3 separate types of oscillator, theory about them, right? When you are clear with the theory concept, then we will move toward the lab part, right?